This meeting is being recorded. So Shubham, let's proceed ahead with your mock for Bihar Public Service Commission assistant professor job. So me and Saklani sir will proceed ahead with your mock. So I initiated till Saklani sir joins. So Shubham, a very brief introduction from your side related to your background, academic background. आपने कहाँ से B.Tech, M.Tech किया है, गैप कितना है और अभी क्या कर रहे हैं? Good morning, sir. My name is Shubham Kumar, and I am from Sektura district, Bihar. And I have completed my matriculation and intermediate both from Sektura itself. After that, I have completed my graduation from Mutihari College of Engineering in Mechanical Engineering. After that, I have done my master's in machine design from IIT IIM, Dhanbad. After that, I have worked as an assistant professor in Presidency University, Bangalore. Currently now, I am preparing for the government and teaching exams. कितना टाइम से आप as AP काम कर रहे हैं? Sir, I have worked for approximately 9 to 10 months. 9 to 10 months से आप कर रहे हैं? No, sir, I have left the job and currently I am now preparing. आपका जॉब कितने साल रहा आपका as AP? Approximately 9 to 10 months, sir. 9 to 10 months आपने किया था? Yes, sir. So उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ा है? Sir, I was dealing with basic mechanical engineering. Okay. Basic mechanical engineering, that is a very basic course. Yes, sir. It was for the first year. As I joined as a placement, college placement. So in the first year, what they do is just freshers for just freshers. They just give the first year classes. You have not taken any subject for mechanical engineers? Yes, sir, I have taken. What is that? That was kinematics of machinery. Kinematics of machinery. उसमें क्या था? So it was a third year course, and the professor was not available for some time. Which machinery? Related to what? It was related to the dynamic. There is two parts of the theory of machine. The first one we call it as a kinematics, and the second one we call it as a dynamics. So you must have done velocities and yes. instantaneous centers and accelerations, right? Yes. In kinematics. Yes. Okay. So Shubham, आपका B.Tech और M.Tech के बीच में कोई gap? So 1 year gap. I have prepared it for the GATE exam. And after M.Tech? And after M.Tech, I have joined as an assistant professor. And in 2019, I left it and started preparing for this government exam. तो आपने छोड़ क्यों दिया? आप तो AP की जॉब में साथ साथ कर सकते थे तैयारी. Sir, time constraint मेरे लिए हो रहा था. मैं अपनी तरह अपने fully preparation पे focus नहीं कर पा रहा था. Yes, sir. So आप शुभम टीचिंग में आना क्यों चाहते हैं? सर, टीचिंग में आने के मेरे दो रीजन हैं. पहला तो ये मुझे कि टीचिंग पसंद है और मैं इसे लाइक करता हूँ. ये मैंने मुझे ये पढ़ाने के दौरान ही फील हुआ. दूसरी ये है कि सर मेरे जो बैकग्राउंड है, मेरे दादाजी भी टीचर थे और मेरे पिताजी कॉलेज प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में. उन्हीं की तरह मैं भी टीचिंग में ही अपनी एबिलिटी को यूज करना चाहता हूँ. तो टीचिंग में आपको क्या करियर देखना है अपने लिए लॉन्ग टर्म में? सर, टीचिंग में लॉन्ग एज अ कैरियर तो सिर्फ टीचिंग ही होता है. इसके अलावा अगर एक कॉलेज को मैं अगर बेहतर बना सकूं, सिर्फ एक कॉलेज को भी मैं अगर बेहतर बना सकूं, तो ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा. बेहतर किस वे में? बेहतर in terms of 2 or 3 things, sir. The first one is the basis of the knowledge. The second one is on the moral characteristic of the student, and the third one is the industry exposure, so that they can give something back to this technical community. Okay, आप शुभम अदर देन टीचिंग किस डोमेन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कॉलेज में? सर, मैं इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो मैं हॉस्टल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड रहता हूं, क्योंकि मुझे बच्चों का जो खाना है वो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है. The mess which we are running in the college is also a major part of this learning system. So just I wanted to be in that part also, so that each and every student gets its own nutritious and healthy food.
अच्छा, आप कुछ लैब्स के बारे में बता सकते हैं मेरे को, कौन सी लैब्स रेलिवेंट हैं आपकी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के साथ, जो डेवलप की जानी चाहिए कॉलेज में? सर बेसिक लैब्स तो जो होती है हमारी लेथ मशीन और यूनियस एक्सेल टेस्टिंग मशीन, ये तो बेसिक लैब होती हैं जो मेरे ख्याल से सारे कॉलेजेस में होती है। अगर मेरे स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के दौरान एक वाइब्रेशन सेटअप मेजर करने का एक सेटअप डेवलप किया था, जो कि बेस्ड था नेचुरल फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट पे। सो उसे मैं डेवलप करना चाहूंगा अगर मुझे मौका मिला तो। ओके। अच्छा, आप मेरे को शुभम ये बताइए, बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे गवर्नमेंट के, एनी आइडिया? यस सर, ये सर अप्रोक्सीमेटली 19 है सर। 19? 19 गवर्नमेंट कॉलेजेस एज आई नो। ओके। अच्छा, मेरे को ये बताइए शुभम, आप ये कोरियोलिस एक्सेलेरेशन का कुछ जानते हैं क्या? यस सर। व्हाट इज द कोरियोलिस एक्सेलेरेशन? सो सपोज कोई कंपोनेंट हैविंग अ स्लाइडिंग वेलोसिटी एज वेल एज रोटेटिंग वेलोसिटी, तो उस पर एक फोर्स लग रहा होगा एक्स्ट्रा, वो कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा। उसकी जो डायरेक्शन होगी कोरियोलिस फोर्स की, वो स्लाइडिंग वेलोसिटी वेक्टर को 90 डिग्री रोटेशन, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है बॉडी, उसके डायरेक्शन में घुमाने पे उसकी उसका फोर्स क्या का डायरेक्शन। रिक्वायरमेंट होता है कोरियोलिस एक्सेलेरेशन लगने का? सर अगर ये कोई फोर्स हम बॉडी पे डेवलप कर रही है तो किसी भी कंपोनेंट के डिजाइनिंग के दौरान हमें उसका टेक केयर करना होता है, जैसे कि ग्रेविटी और अनदर फोर्सेस की तरह। और कौन कौन सी एक्सेलेरेशंस लग सकती हैं एक लिंक के ऊपर? सर मोस्टली एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है और दूसरी टेंजेंशियल। एंड ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल किस कैटेगरी में आएगा? सर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल आर एक ये एक्सेलरेशन होता है जो सेंट्रीफ्यूगल जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू रोटेशन, और सेंट्रीपिटल है जो इनवर्ट टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा ड्यू टू द रोटेशन। एंड व्हाट डू यू नो बाय इंस्टेंटेनियस सेंटर? सो इंस्टेंटेनियस सेंटर कोई बॉडी है जो कि जनरल मोशन में है। जनरल मोशन आई मीन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो इसकी एनालिसिस के लिए हम एक कोई इंस्टेंटेनियस सेंटर डिफाइन करते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। उस पॉइंट के अबाउट क्या होता है कि वो बॉडी अज्यूम टू बी एज अ प्योर रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट। तो इससे हमारी एनालिसिस इजी करने के लिए इसको करते हैं। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैनेडीज थ्योरम? सर कैनेडीज थ्योरम ये कहता है कि सपोज वी हैव अ थ्री लिंक एंड दे आर हैविंग रिलेटिव मोशन विद ईच अदर, तो उनका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा एक लाइन में आएगा। ओके। सो आप बोर्ड पे जाके मेरे को इसके इंस्टेंटेनियस सेंटर बता सकते हैं 4 बार मैकेनिज्म के? यस सर। कैन हाउ मेनी आई सेंटर्स वी हैव इन 4 बार मैकेनिज्म? सर इट विल बी 6। कैन यू शो ऑल? Yes, लेट्स से स्लाइडर क्रैंक के लिए। yes, sir. Okay, please show on the board all the 6 eye center for slider crank mechanism. Single slider crank mechanism. Yes, single slider. So I will make a little bit adjustment from my Yes, to my please go laptop. ahead. Yes, it is perfectly Meeting is visible. being Go ahead. recorded. Sir, I will be drawing. So I have to explain it or simply just draw it? Yes, simply draw it. I'm interested only to know. Yep. Sir, I'm showing the instantaneous center with the blue color.
Okay. Okay, I think Saklani sir can proceed ahead. You have done your M.Tech in machine design, right? Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Haan, Shubham, good morning. So, Shubham, what was your M.Tech project? Sir, my M.Tech project was experimental vibration analysis on a laminated and delaminated composite plate. Mm-hmm. So, what was it all about? Can you explain it very briefly? Yes, sir. It was the effect the effect of a delamination on the natural frequency has to be investigated on my project. So, just sum it up. Give me the summary of the what was it all about and all that. Okay, sir. Very briefly. So it was a completely based on the experimental setup in which we have used 3 to 4 equipments like a sensor, as a accelerometer, and amplifier, a D-space controller board. With the help of Autodesk and MATLAB, we have generated a setup for the data acquisition for the composite, and we have made a composite plate of a carbon fiber in our own lab with a hand layup method, and artificially we have generated a delamination in the composite. After that, we just try to find out how this delamination is affecting the natural frequency of the plate. And the second thing, we just try to find out how the clamping on the plate is affecting. Okay, Shubham. Okay. So, Shubham, why nowadays we are making use of the carbon fiber composites? So, although the strength of the carbon fiber is as same as mild steel or something like that, the main advantage we use can be explained by 2 ways. The first one is the weight of the composite is very less, and the second thing is tailoring of the property is possible. Tailoring of the property, I mean, is suppose in any particular direction I need a strength, or in any particular direction we need a stiffness or some other kind of property. It can be done in composite plate. That's the main benefit I consider. Apart from that, it has a good toughness, corrosive resistance, and stiffness. Any specific uses that you know about it? Yes, sir. Most of the automobile sector, if in the inside all the desk and plastics we are seeing it is a composite plate. The laptop, most of the laptop cover is made of a composite plate. Okay, so what are your favorite subjects? Sir, strength of material and fluid mechanics. Okay. Okay, let's say you want to design a shaft, right? Am I audible? Yes, sir. Okay, so let's say if you want to design a shaft, and this is let's say a turbine shaft, let's say. Yes, sir. So what are the different stresses that you will consider over here for designing the shaft? What are the difference? Stresses that you will consider over here to design this shaft. So as it is in the rotational motion, 2 or 3 stress will be dominantly I should consider. The first one is the torsional stress,
The second one is bending stress, and the third I have to consider is the shear stress, in which bending stress and torsional stress will be predominant. And how are you going to design this particular shaft? So the loading on the shaft is of a fatigue loading, so its design will be based on the fatigue strength of the material. So how do you design in fatigue? How do you definition of a fatigue? No. How will you design in fatigue in this case? Sir, I will be using the first we have to calculate is the maximum stress that is cyclic in nature. The maximum stress it is the value of the maximum stress, and from that we will be calculating the mean stress and a stress amplitude. After the calculation, I will be using Soderberg criteria for the dimension. No, but these are the different stresses. So how will you calculate? This is not only one stress. These are the three different stresses that you told me, and all are cyclic in nature as per you. Are they cyclic in nature or what? Yes, sir. So then how will you go ahead in this case? Sir, I will be using, as there is a case of a combined loading. So first we will have to find the principal stress to find out the maximum stress coming on the shaft. Then? After calculation of this principal stress, or that I am calling it as a maximum stress, then I will be using the Soderberg criteria by calculating the mean stress, that means sigma max plus sigma minimum by 2, and amplitude stress, that means sigma maximum minus sigma minimum by 2. But why you chose principal stress only? Why not maximum shear stress and minimum shear stress? How did you decide that you have to go ahead with the principal stresses, not with the shear stresses? So I am thinking that bending stress will be more. The effect of a bending stress is more than this the shear stress. That is okay, but how you decided about whether the principal will be more, or whether you have to go with the principal or whether you have to go with the shear? That decision, how did you take? So I'm not completely sure about this. And why you are choosing Soderberg only? So it's a most conservative theory, which gives us the most safest result. And the failure in case of a turbine may be a catastrophic. That's why I am choosing the most conservative theory. So you are okay with the uneconomical design? That's what you are saying. So if the effect I am considering is catastrophic in that point of view, I thought that then it will be. Tell me some of the example where you think that effect may not be catastrophic. So suppose there is a failure which doesn't affect the life of a human. For example, I am currently unable to think that particular example. Most of the situations are going to be of the nature that mostly they will be of whether you are at a home or whether you are in a factory. So if you will go that way, if you will become very conservative all the time, then all the time you are going to have a uneconomical design, whether you talk about aeroplane, whether you talk about ship, or whether you talk about a bridge. Don't you think so? Whether you talk about a car. So the effect on the failure of the turbine will be affecting the whole plant. That's why. Okay. So out of all these, why you call it as a conservative? Conservative means it is taking the extra safety points. That's why it is called. That's why called as a most conservative. That means it's the most safest theory. Okay. So which one is the most, you can say, the best one among all these? So best one we can't say. It will depends upon the type of loading and other criteria. Yeah, loading is the fatigue only.
fluctuating? So it depends upon the type of material we are using. Let's say I'm using brittle material. In case of a brittle material, we may use Goodsman theory also. Why? So it consider ultimate strength as its criteria for this failure. So as the brittle material fails with this ultimate strength, on the ultimate strength, that's why it is on. That's why brittle material can be designed with the Goodsman criteria. it means ductile and brittle materials behaves in different way in fatigue loading. That's what you want to say? No, sir. Then why did you choose Goodman's? Both the material behaves in the same way. Then why you are saying that for brittle material you should go for Goodman? I'm not particularly 100% sure about this. ठीक है, सुनो अब आपको फीडबैक देते हैं, ठीक? थोड़ा सोचना है आपने ना, जब भी आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सोचो उसको। जैसे शाफ्ट मैंने दे दिया, आपने लोडिंग बता दी, चलो एक टॉर्शनल बता दिया, बेंडिंग आपने बोला जी प्रेडोमिनेंट होगी, चलो शियर भी बता दिया। अब कैसे डिजाइन करना है, तो एक तो होता है कि हम एक बेसिक डिजाइन है वो हो गया स्टैटिक लोडिंग वाला डिजाइन, कि एज्यूमिंग की स्टैटिक है तो हम कोई थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करें और बात खत्म कर देते हैं, ठीक है। पर आपने बोला नहीं, आपने डायरेक्टली, तो आप दोनों अप्रोचेस बता दो। अब बोलो स्टैटिक लोडिंग या बहुत लो स्पीड वाली केस है, उस केस में हम एक अप्रोच है ये अडॉप्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मटेरियल होगा शाफ्ट एंड वी कैन गो अहेड विद आइदर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और मे बी शियर स्ट्रेस थ्योरी। एक तरीका ये है। दूसरा ये है क्योंकि ऑब्वियसली टरबाइन शाफ्ट है तो फटीग लोडिंग में जाएगा, सिग्निफिकेंट लोड्स होंगे, तो फटीग के लिए हमें डेफिनेटली वी शुड डिजाइन फॉर दैट, ठीक है। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग है आपका, तो कॉम्बिनेशन लोडिंग में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट के टर्म में बात करनी पड़ेगी। क्योंकि हो क्या रहा है, जैसे टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है वो भी क्या हो रही है, वेरी कर रही है, मैक्सिमम हो रही है, मिनिमम हो रही है, बेंडिंग है वो भी मैक्सिमम मिनिमम हो रही है, ठीक है। मतलब दोनों में हो क्या रहा है, एम्पलीट्यूड भी है, मीन भी है, या शियर है उसमें भी ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आप इक्विवेलेंट के टर्म में बात करो कि मैं पहले क्या करूंगा, इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड एंड इक्विवेलेंट मीन निकाल लूंगा पहले ही। लेट्स से आपने कोई डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी यूज की, शाफ्ट है तो उस केस में डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का यूज करके आपने पहले इक्विवेलेंट मीन और एम्पलीट्यूड निकाल लिया, ठीक है। अब अगर आपने निकाल लिया उसका, तो अब आप प्रोसीड कर सकते हो। पर आप अलग तरीके से चले गए, आपने बोला कि मैंने जो है मैक्सिमम निकाल लेना है, मिनिमम निकाल लेना है, फिर फंस गए ना, उसमें फंस जाओगे आप, क्योंकि भाई आप प्रिंसिपल ही क्यों कंसिडर करो, शियर क्यों नहीं कंसिडर करो। तो इसलिए वहां पर ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। यस सर। इक्विवेलेंट का मीन आ गया, इक्विवेलेंट का एम्पलीट्यूड आया, तीनों का, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में आपको डाल के देखना पड़ेगा ना। फाइनली वी हैव मीन एंड एम्पलीट्यूड। एक बार वो आ गया, फिर मैं कोई भी थ्योरी ऑफ फेलियर, सॉरी कोई भी मेथड यूज कर सकता हूँ, जो 3 मेथड हमारे पास हैं, ठीक है। अब सोडरबर्ग जो है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है, बट आप उसको प्रेफर नहीं करोगे ना, हमेशा प्रेफर थोड़ी करोगे आप, बेसिक डिजाइन के लिए ठीक है, पर वो तो अगर ऐसा करने लगे तो हर बार हमारा अनइकोनॉमिकल डिजाइन आएगा। आप किसके साथ जाओगे, हमेशा आप जो है जाते हो जो थ्योरी आपको बेस्ट रिजल्ट्स देती है। बेस्ट रिजल्ट्स का मतलब है कि बहुत क्लोज रिजल्ट देती है एक्चुअल फेलियर के। तो अगर हमें पता है कि इसके आसपास ही फेल होना है, तो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ऑप्टिमम अप्लाई करूंगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों ज्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट फेलियर कहाँ आ रहा है, तो हम थोड़ा सेफ रहने की कोशिश करते हैं, तो अनइकोनॉमिकल पे थोड़ी जाएंगे हम। तो इनमें तीनों में जो है बेस्ट रिजल्ट्स आपके आते हैं, जो गर्बर आपका कर्व है, गर्बर कर्व आपको जो है बेस्ट, हाँ, तो वो यूज करनी थी। और फिर उसमें भी आपने थोड़ा सा एक गड़बड़ की लास्ट में, कि आप बोलते चलो बेस्ट वन नहीं बोल सकते, चलो ठीक है वो भी, तो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए आप बोलो गुडमैन तीनों थ्योरीज हम जो है, तीनों जो है मेथड जो है हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे डक्टाइल है चाहे ब्रिटल है, क्योंकि फेलियर मोड तो सेम है ना। यस सर। तो आप प्रेफर क्यों कर रहे हो, वो तो उसने अप्रोच अडॉप्ट की उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए। जस्ट बिकॉज ये अल्टीमेट से ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करोगे आप, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी क्लैरिटी और ले आओ इसमें, मतलब इस पॉइंट से, ठीक है। ओके शुभम, एक तो जो आपने टॉपिक वहां पढ़ाए हैं ना कॉलेज में,
जो आप बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल बोल रहे हो, वो तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को करवाया ना आपने, और जो आपने मैकेनिकल को करवाया वो आप अवॉइड कर रहे थे, आपने थ्योरी ऑफ मशीन करवाया है उनको। आई डोंट नो वेदर यू प्रिपेयर्ड इट और नॉट। तो वो थ्योरी, हाँ, सो ये दे विल आस्क यू इन दैट, सो यू कैन टेल के थ्योरी ऑफ मशीन मैंने करवाया, उसको ढंग से रिवाइज कर लो। एक्चुअली थ्योरी ऑफ मशीन का जो डायनेमिक्स वाला पार्ट है सर, वो कुछ मतलब कुछ उसका सिलेबस ज्यादा हो जा रहा है, जैसे कि स्टैटिक। दे कैन आस्क यू, क्योंकि अब उनके मुंह में कोई क्वेश्चन आ गया तो पूछ ही लेंगे, वो सिलेबस का तो क्या है। बट अगर आपने पढ़ाया है वो सब्जेक्ट और मशीन डिजाइन में एमटेक को, तो थ्योरी ऑफ मशीन वो आपसे पूछेगा। तो डिजाइन के सारे ही सब्जेक्ट आपको ढंग से करके जाने चाहिए, मेरे को जो लगता है। एक उस पर वर्कआउट कर लो। नंबर 2, आपने क्यों टीचिंग छोड़ा है, तो उसका थोड़ा सा कर लो कि मैंने छोड़ा क्यों था। उसके बाद कि सर मैं एक्चुअली टीचिंग, मैं गवर्नमेंट टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड था, और इन द मीन टाइम नोटिफिकेशन आ रहा था, तो आई थॉट टू गिव माई 100%, तो मैं फिर छोड़ के तैयारी करने लग पड़ा। ऐसे दिस वे यू कैन एक्सप्लेन दैट। सर एक्चुअली ये 2020 में ये नोटिफिकेशन आया है और मैंने छोड़ा है 2019 में। हाँ, तो स्पेकुलेशन तो पहले ही लपड़ती है ना हमें। एंड आप ये जरूर बोल सकते हैं कि मैं 19 में छोड़ दी सर, बिकॉज अगर मैं नहीं छोड़ता तो एक और सेमेस्टर के लिए बाउंड हो जाता, बिकॉज कमिटमेंट सेमेस्टर के बीच में नहीं छोड़ी जाती है। Yes, right? sir. And there was a speculation that it is going to come, and it came also later on. तो उसी को परसीव करते हुए, this was the purpose I did my MTech and this is what I wanted. So I thought to give my 100%, and I'm happy कि sir I am here today. तो ऐसे आपने बोलना है, right? Yes, sir. बाकी सकलानी सर ने आपको बताया है, उस पर वर्कआउट करो और ये सब्जेक्ट स्टार्ट सारे डिजाइन वाले करो। Okay, sir.